everyone, greetings from Croma Campus. Today in this video, you will be learning about Azure AZ-900 and AZ-104. Your trainer for today will be Mr. Jogender. Welcome to all of you in our today's demo session. Our today's demo session agenda is, first of all, we will discuss about trainer's profile. In our trainer's profile, we will discuss about the name of the trainer, qualification of the trainer, and total how many years of experience trainer have. Second thing, we will discuss about why we require Microsoft Azure Administrator course. Microsoft Azure Administrator course क्यों करना चाहिए हमें? क्या जरूरत है इस कोर्स को करने की? इसके बेनिफिट्स क्या है? फायदे क्या है इसके? अगर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इंडस्ट्री में कहां हमारी पोजीशन क्रिएट होगी? तो ये सब सवालों के जवाब हम इस डेमोस्ट्रेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. थर्ड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट हु कैन डू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स. ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स कर सकते हैं? What are the prerequisite requirements in order to join the course Microsoft Azure Administrator? लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक डेमोस्ट्रेशन वर्चुअल मशीन क्रिएशन एंड एक्सेस. This will be a small demonstration in which I will demonstrate you how to create a virtual server in Microsoft Azure Cloud Platform and how we can access from our local computer. हम Microsoft प्लेटफॉर्म पे एक सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, उसको अपने फिजिकल लैपटॉप में या फिजिकल डेस्कटॉप में हम रिमोटली कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम एट द एंड हम समझेंगे. सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड देयर इज अ ट्रेनर्स इंट्रोडक्शन. Trainer name is Joginder Singh Tomar. This is me. My name is Joginder Singh Tomar and I will be your Microsoft trainer. I will teach you Microsoft Azure Cloud. My qualification is Master of Computer Applications. Total, I have 14 years experience. Out of 14 years experience, initially 5 years I worked on various other technologies. And that technologies are Cisco, VMware, SCCM, SCOM, Windows Server, Linux Server, Exchange Server, Office 365, and many more. After 5 years, I switched to the cloud platform and cloud technologies. Then I started working and teaching on Microsoft Azure Cloud, AWS Amazon Cloud, and Google Cloud platforms. I train more than thousands of the students from India and abroad also. मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो कि इंडिया के अंदर हैं और इंडिया से बाहर वाले भी हैं. I taught fresh college pass out students and experienced corporates also. मैंने वो स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बीसीए, बीकॉम विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स फंडामेंटल एंड नेटवर्क फंडामेंटल हासिल की थी. और वो ग्रेजुएट्स को भी मैंने ट्रेन किया है जिन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट की थी, जैसे कि बीटेक, बीई. बट आपको मालूम है जस्ट पासिंग द डिग्री इज नॉट इनफ. इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से रिक्वायर्ड होती हैं. और हमारे जो बीसीए, बीटेक कोर्सेज जो होते हैं उनके अंदर वो सब चीजें लैक करती हैं, नहीं होती हैं, जो कि इंडस्ट्री में हमारे को जरूरत होती है, इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए. सो आई टीचेस all that technologies, all cloud technologies which is required to get a better job, bright job, and to get a position in the industry. I taught students from abroad like USA, Europe, Africa, and Middle East countries like Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, Oman, etc. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है जो कि यूएस से बिलोंग करते थे, यूरोप से बिलोंग करते थे, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बिलोंग करते थे.
तो मेरा बहुत एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है इंडियंस के साथ भी और फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ भी. So this was about my profile. So let's move on towards our next slide. हमारी next slide क्या कह रही है उसके बारे में जानते हैं. So in this slide we are showing that who can join this course. कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे Microsoft Azure Administrator के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. So that people are graduates with fundamental knowledge of computers and networking. वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको सिर्फ एक फंडामेंटल नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी मैनेजर, developers, software engineers, network security specialists, solution architects, system engineers, project managers, and many more. Those who want to upgrade their skill in cloud platform, in Microsoft Cloud Platform, that people can start up their career with the course Microsoft Azure Administrator. We will guide you how to work better, how to accomplish that things which is required in the industry. What I provide to my students. If you'll join this course and I will be your trainer, मैं आपको क्या provide करूंगा इसके बारे में जानते हैं. Hands on labs and assignments. मैं आपको hands on labs करने के लिए दूंगा और बहुत सारी assignments दूंगा जिनको करते करते आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि आप रियल टाइम वर्क में, रियल टाइम इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. यू विल फील लाइक दैट यू आर वर्किंग इन द रियल इंडस्ट्री, you are working in the real life environment. So you will get the feeling in my classes like this. So what kind of assignments you will get it, I will show you. So you will get that assignment like this. Like this. See. So this is the assignment, right? This is the assignment. This is a sample assignment. So I will share you all assignments whenever you will join this course. So I will give you time to time lots of assignment. You will play with the cloud technology. You will use lots of services. You will play with lot of services. I will train you how to play with the cloud services, right? Many assignments I will give you, right? These are all assignments. This is for you. See? Okay. What else I will provide you? I'll provide you projects. So I have lots of projects. So I'll provide you Capstone Projects, right? I will provide you Capstone Projects. So Capstone Projects looks like this. See? So this is a sample project. So this sample project, the heading of this sample project is load balancing and virtual machine skill set. So this is a Capstone project. So you will feel like that you are working with the real project and you are associated with your customers. You are associated with the clients, US clients, UK clients, Australian clients. So I will provide you the real-time scenario cases, use case scenarios. So that will be very helpful to grow up and to get a very nice position in the industry. आपको ऐसा फील होगा कि आप रियल टाइम में काम कर रहे हो और रियल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो और रियल पर्संस के साथ काम कर रहे हो. तो ये प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. What else I will provide? I will provide resume support. रिज्यूम्स कैसे बनाते हैं, टेक्निकल रिज्यूम में क्या क्या खूबियां होती हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा. ये देखिए, these are the resumes. These are the resume of many students, right? These are the resumes of many students. So I will help you to create a
very nice resume, very technical resume with technical words. Let's see this sample. This is one of the resume. Cloud engineer. Manoj is a person, Manoj Kumar. And we helped Manoj to create a technical resume. What technical words you have to use to attract the HR people, to attract the industry? They will focus on your resume. Your resume will be the front end. If your resume is nice, then you will get lots of opportunities. So how to create a nice technical resume will help you in this matter. So we have lots of resume, right? What else we will provide? We will provide you the interview preparation tips. We'll prepare you for the technical interviews, technical round 1, technical round 2, technical round 3. And we are sure that you will grab a nice job in the industry, in various nice companies like the IBM, HCL Technologies, Infosys, etc., etc. Not even in India, you will qualify to get a job in abroad also. You will work abroad. You can get a job in abroad. So now I'm going to show you a nice demonstration. In this demonstration, I will create a virtual server, virtual machine, and that virtual machine I will access from my physical computer. Let us try to understand what this demonstration is saying. This demonstration is saying that whenever we will create any computer in our cloud platform, that will be virtual in nature. In our physical computer or the physical server, we have hardware-based RAM, we have hardware-based disk, we have hardware-based CPU. But whenever we will see in the cloud, whatever the servers we will create in the cloud, that will be in virtualized form. Even the internal components like the RAM, disk, right? CPU. So all these internal components will be in the virtual form. And whatever the operating system we want, we can decide according to our choice, according to the requirement. It can be a Linux-based operating system, right? Linux-based, we have many flavors. We can have the Ubuntu, we can have the Red Hat, CentOS, etc., etc. And we can install, or we can install the Windows Server based operating system. It can be Windows Server 2012, it can be Windows Server 2016, Windows Server 2019. कुछ भी Windows Server का operating system भी install कर सकते हैं. Linux based operating system भी अपने virtual server के अंदर install कर सकते हैं. ये याद रखने की जरूरत है, जो भी हम server या resource cloud के अंदर बनाते हैं, वो एक virtual form में होता है. उसको रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं हम अपने कंप्यूटर से, वो हम आज अपने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सीखेंगे. एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपको एक आइडिया देगा कि क्लाउड के अंदर हम किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे. अच्छा, सो लेट्स गो टू द पोर्टल. मेरे पास एक पोर्टल है और मैंने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. So let's move on towards the cloud. In order to move on towards the cloud, Microsoft Azure Cloud, I have to get login inside the portal of Microsoft Azure. तो पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के लिए हम portal.azure.com टाइप करते हैं और प्रेस एंटर करते हैं. ये देखिए मैं लॉगिन हो गया. I got successfully logged in inside my Microsoft Azure portal, but it didn't ask me the credentials. Why it didn't ask me the credentials? Credentials means username and the password. मेरे को क्यों नहीं इसने पूछे? क्योंकि मेरे यूजर आईडी एंड द पासवर्ड इसके अंदर सेव हो चुके हैं मेरे वेब ब्राउजर के अंदर. ठीक है. अब अगर लॉगिन करेंगे पोर्टल के थ्रू, मैं इनकॉग्निटो विंडो यूज कर लेता हूं. मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि यूजर नेम और द पासवर्ड वो किस तरह से आपको पूछेगा एंटर करने के लिए.
तो portal.azure.com आप ऐसे ही एंटर करेंगे. Then it will ask you to enter the email address, registered email address that you have given at the time of subscription. Whenever you have taken the subscription, that email address you have to mention here. So I will enter my email address. I have to click over next, and now I have to enter my password. तो अब ये पासवर्ड मैं एंटर कर चुका हूं. Look at this. I'm getting successful login inside my Microsoft Azure portal. अब मेरे को एक वर्चुअल सर्वर बनाना है. उस वर्चुअल सर्वर के अंदर मैं एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा. लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इन माय एग्जांपल आई विल इंस्टॉल लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. You can see this portal, right? And we need to click over virtual machine at the left hand side. So virtual machine is a service, virtual machine option. So here we need to click over create. We need to click over the sub option, Azure Virtual Machine. Then it will redirect us towards the subsidiary console. Now, here we need to assign a resource group. हम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हमें पूछा जाता है कि किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर इसको आप इंक्लूड करोगे. व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप? Resource group is the logical group in which we will place the resources for our project. तो रिसोर्स ग्रुप को हम क्रिएट कर लेते हैं. अगर हमने पहले से रिसोर्स ग्रुप अपने क्रिएट कर रखा है तो एग्जिस्टिंग से रिसोर्स ग्रुप हम सिलेक्ट कर सकते हैं. बट आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू रिसोर्स ग्रुप. लेट्स क्लिक ओवर क्रिएट न्यू. आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस रिसोर्स ग्रुप एज project 1. So I assigned the project 1 as a resource group. I am assigning the virtual machine name as Linux IBM Linux Server 1. IBM Linux Server 1. So we are assuming this is a virtual machine or the virtual server that we are creating for the IBM company, right? Region we can select as per our choice. Region means logical geographical location in which Microsoft Azure data centers are located. Microsoft Azure के वर्ल्ड के अंदर कई जगह डेटा सेंटर्स हैं और वो डेटा सेंटर्स की लोकेशन, लॉजिकल लोकेशंस को बोलते हैं हम रीजन. ठीक है. सो अब रीजन हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं अपना नियरेस्ट रीजन, दैट इज वेस्ट इंडिया. सो बेटर टू सिलेक्ट दैट रीजन विच इज नियरेस्ट टू योर फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन. अब मैं इंडिया में हूं तो मेरी नियरेस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन और नियरेस्ट फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा सेंटर इज वेस्ट इंडिया. क्योंकि अगर हम नियरेस्ट रीजन सिलेक्ट करते हैं तो रीड एंड एक्सेस और स्पीड रिसोर्सेज को करने की वो फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू द रीजन विच इज वेरी फार फ्रॉम आवर फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu रहने देते हैं. So we have various images of the operating system. These images just like a DVDs of the operating system. तो Windows Server 2016 भी है, 2019 भी है और बहुत से अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, Red Hat भी है, Oracle भी है, Debian 11 भी है. But right now I am selecting Ubuntu. Then size. In the size we will select the combination of the virtual hardware. So we have many sizes. See all the sizes. You'll get multiple sizes. We have D, S1, V2. Size means
how much should be the RAM, how much should be the CPU. The combination of the virtual hardware we can choose as a size. The various plans we are calling as sizes. Let's say DS1 V2. If you choose this size, we are getting the one virtual CPU, we are getting the 3 GB of the RAM, right? If you'll choose DS1 underscore V2, this is same, right? Yeah, we have other sizes also. If you'll choose B2S, then we'll get two virtual CPUs and 4 GB RAM. We have other sizes also. Let's say if you choose D8S underscore V3, then after the selection of this size, we'll get 8 virtual CPUs and 32 GB RAM. But I am selecting the minimum one because we are in the learning environment. So I am selecting here DS1 V2. After the selection of the size, this size will get in our virtual machine, in our virtual server, we'll get one virtual CPU will get installed and 3.5 GB RAM will get installed. And 4 data disks will get installed and input output per second. Input output per second, we are getting 3200. Okay, click over select. Select the password. Authentication type, we have a password. We have two authentication method. Number one is SSH, public key, and second one is a password. So we mostly are using the password based authentication. It is asking for the username. Username we are giving Azure, and password we will give capital P ASSWORD @123. It is asking for the confirmation of password. We are giving capital P ASSWORD @123. We confirmed the password. If the password is matching, then it will not show any error. Scroll down, click over next. It is asking for the disk. What quality of the disk we want in our virtual machine? Premium SSD, standard SSD, standard HDD. Standard HDD means it's a kind of magnetic disk. The speed of the magnetic disk is very less and it is cheaper kind of disk, right? And the premium SSD, both are the SSDs, but the premium SSD having the super speed. We'll continue with the premium SSD. Scroll down, click over next. Then it is asking for the virtual network. Virtual network we can create from here, and it is showing the name. It is showing the hint project 1-VNet. We will continue with the same name. And we'll continue with the same subnet 10.0.0.0. It means whatever the IP address will be assigned, means private IP address. Whatever the private IP address will be assigned to this virtual machine, it will be from this network range. We'll scroll down and leave all the settings as it is. Click over next. We will disable the boot diagnostic mode. Click over next and we'll click over review plus create. Then finally, we have to click over create. And you can see here the 6.0518 Indian rupees per hour. What does it mean? It means if we will continuously run this server for the 1 hour, we will get charged 6.0518 Indian rupees, right? This is the per hourly basis charges that Microsoft will charge us, right? But don't worry about that. We will not continuously run this server. Once the virtual machine will get created and we will be able to access, we will delete the resources. So we will skip from the more charges. So click over create. So guys, हमारा सर्वर जो है लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म में वो क्रिएट हो रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा Ubuntu। अब ये सर्वर कहाँ बन रहा है, कहाँ क्रिएट हो रहा है? ये क्लाउड के अंदर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसी सर्वर को मैं अपने ही लैपटॉप से एक्सेस करके बताऊंगा मैं आपको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर जो कि आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप सीखेंगे। यू विल learn lot of the things in this course that you will learn after joining the course.
So the status it is showing deployment is in progress. Deployment start है. Deployment का मतलब कि installation start है. Once the installation will be completed, we will take the remote access on our physical computer. जो मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, इस लैपटॉप से मैं इसका रिमोट एक्सेस ले लूंगा. ये देखिए, what it is showing the status, deployment succeeded. Deployment succeed हो चुका है. ये Linux सर्वर हमारा बन चुका है. Click over the virtual machines options. तो यहाँ पर देखिए वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है, IBM Linux Server 1 जो हमने दिया था वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय. सब्सक्रिप्शन का नाम बता रहा है, सब्सक्रिप्शन MSDN प्लेटफॉर्म जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, और रिसोर्स ग्रुप का नाम प्रोजेक्ट 1 दिखा रहा है, लोकेशन वेस्ट इंडिया बता रहा है, और स्टेटस बता रहा है क्रिएटिंग. अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो स्टेटस चेंज हो गया, रनिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमें पता है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है Ubuntu. ये पब्लिक आईपी एड्रेस है. सो गाइस, अगर इस वर्चुअल मशीन को जो कि क्लाउड के अंदर है, इसको मुझे अपने फिजिकल लैपटॉप में एक्सेस करना है, तो मेरे को क्या चीज की जरूरत होगी? I need to know what is the public IP address, and I must have the application must be installed on my computer, which is called as putty. तो पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं कॉपी कैसे करूंगा? यहाँ पर देखो आप. So click over IBM Linux Server 1. Just copy this public IP address. This is a copy option. Whenever you will click over copy, it will show you the notification as copied. ये देखिए, copied बा. अभी कॉपी हो चुका है. अब मैं पुट्टी नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट. यू कैन इजीली डाउनलोड इट विदाउट एनी पेमेंट, और आप इसके थ्रू, ये क्लाइंट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू इस वर्चुअल सर्वर को आप एक्सेस कर पाएंगे अपने फिजिकल कंप्यूटर पे. आईपी एड्रेस हमने कॉपी कर लिया था. लेट्स पेस्ट दिस आईपी एड्रेस. आई थिंक इट्स नॉट प्रॉपरली कॉपीड. लेट्स कॉपी इट अगेन. Now paste it, right click and paste. You can see the public IP address, we copied it. Now click over open. Now it is asking accept. You can see it is asking login as. Login as का मतलब हो गया, ये हमें हिंट दे रहा है कि अपने यूजर नेम को एंटर करो. यूजर नेम हमने क्या किया था जब हमने वर्चुअल मशीन यानी वर्चुअल सर्वर को क्रिएट करना शुरू किया था? सो दैट वाज Azure. अब ये पासवर्ड पूछ रहा है. What password we had given at that time, at the time of creation? We given the password as capital P ASSWORD @123. Then press enter. पासवर्ड मैंने जब टाइप किया वो आपको दिखा नहीं क्योंकि वो हिडन था, लेकिन पासवर्ड टाइप हुआ था. Now we got the successful access of the virtual machine that we have created in Microsoft Azure Cloud. ये मेरी Linux की वर्चुअल मशीन है. वर्चुअल मशीन यानी कि सर्वर जो मेरे क्लाउड पे रन कर रहा है, लेकिन एक्सेस मैं कहाँ कर पा रहा हूँ? अपने फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर कर पा रहा हूँ. तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था. इस डेमोन्स्ट्रेशन में एक टाइम की लिमिटेशन थी, बट वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स यू विल गेट लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच इज सराउंडेड व्हाइल क्रिएटिंग दिस वर्चुअल मशीन. ठीक है. अब जो कमांड्स हम अपने फिजिकली लाइनक्स सर्वर में हम अप्लाई करते हैं, वो सारी कमांड्स हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. राइट. सो if config, right? If config is not working, so we can type sudo apt install net-tools. ये हमें हिंट दे रहा है कि ये कमांड आप टाइप करो तो if config कमांड आपकी वर्क करना स्टार्ट कर जाएगी. If config is a command to display what is the IP address, what is the private IP address of this server. अब हम टाइप करते हैं if config. अब ये हमें IP address बता रहा है. ठीक है. So what is the private IP address of this server? It is, we will get it 10.0.0.4. ये रहा private IP address. I hope so you understood what I did. So this was about the small demonstration. So now I hope so you got maximum idea that why you should join this course. तो
आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का अगर कोर्स ज्वाइन करते हो, then you will be able to create infrastructure or data center, your company infrastructure in the Microsoft Azure cloud instead of the physical data center. क्योंकि फिजिकल डेटा सेंटर में एक ड्रॉबैक था, सब चीज फिजिकल थी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको सर्वर्स को परचेज नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पर जस्ट आप लॉग इन करोगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल के अंदर और जितने चाहिए उतने सर्वर्स आप बना सकते हो, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू पे द बिलिंग। ये रेंटल बेसिस पे चलता है, आपको मंथ के एंड में बिल पे करना पड़ता है जितनी आप सर्वर्स को या रिसोर्सेज को आप रन करवा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं, आई होप सो दैट यू लाइक माय डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस